that we have started with the autonomic nervous system. From the autonomic nervous system, we have already covered the sympathomimetic drugs. We're discussing about the sympathomimetic blockers that we call adrenergic blocking drugs. From adrenergic blocking drugs, we could classify them as adrenergic alpha receptor blocking drugs and adrenergic beta receptor blocking drugs. We have already discussed about the adrenergic alpha receptor blocking drugs that have main role in vasoconstriction in pheochromocytoma and Raynaud's and Burgers disease. Today we start with the adrenergic beta receptor blocking drugs. If you look at this slide, that clearly indicates up to 1958, there was no knowledge of beta adrenergic blockers. Beta blockers block the beta receptors and have their main actions of heart, bronchial musculature, decrease heart rate and decrease in force of contraction. ये एड्रेनलिन के जो नॉर्मल एक्शंस हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है, तो ये उसको डिक्रीज करती है बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग ड्रग्स. सिमिलरली डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ contraction. So first compound to be discovered experimentally as a beta blocker was DCI, dichloroisoproterenol. Dichloroisoproterenol. This compound was discovered in 1958. It is a beta blocker, but may stimulate beta receptors in man. So it's unreliable. Proniclol, another beta blocker, was introduced that was reported to cause tumor of thymus in rats. That also was discarded. And then number of other beta blocking drugs have been introduced, and we classify them according to their selectivity for receptors on different tissues. Drugs blocking all beta receptors includes adrenaline, adrenergic, all beta receptors of adrenaline, जिसको हम कहते हैं non-selective. That blocks both beta 1 and beta 2. That is propranolol. Pranolol mainly blocking beta 1. Pranolol has less effects on bronchi and blood vessels. इसीलिए अगर किसी पेशेंट को एस्मा है, एस्मेटिक पेशेंट है, तो propranolol is contraindicated for that patient only because of the fact that may further aggravate the bronchial asthma. Pranolol has less effects on bronchi and blood vessels. तो इसमें जितनी भी हमारे पास जो बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स आ जाती हैं, if you look at the slide, propranolol, pranolol, sotalol, acrylol, timolol, pendolol, labetalol, metoprolol, acetolol, atenolol, esmolol, nadolol, they all are beta blocking drugs. In the slide, that clearly indicates. And in this, as I told you, propranolol has non-selective action. It blocks both beta 1 and beta 2. However, pranolol has mainly beta 1 blocking activity that we call selective beta blocking drug. अब non-selective में कौन-कौन से आ गए? Non-selective बीटा एगोनिस्ट बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट में प्रोप्रानोल है. इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है प्रोप्रानोल. They have non-selective action, and those which have selective action, one includes एक प्रेक्टोलॉल. मैंने आपको बताया इसमें दो और ड्रग्स आपको नजर आ रही हैं बीटा ब्लॉकर्स की, एथिनोलॉल एंड नेबिवोलॉल, एल्प्रोनॉल एंड ऑक्सप्रिनोलॉल. ये जो एल्प्रोनॉल और ऑक्सप्रिनोलॉल है वो अलग ड्रग्स है, उनका एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, इसलिए ऑलमोस्ट उनका बहुत यूज कम है क्योंकि दे मे फर्दर एग्रेवेट द सम सॉर्ट ऑफ एगोनिस्टिक एक्टिविटी.
Propranolol has quinidine-like activity, membrane stabilizing activity, that is local anesthetic effect. Propranolol block both beta 1 and beta 2, तो उसको हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव. बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है. Propranolol blocks beta 1 selectively, insignificant beta 2 effects and no local anesthetic effects. Beta adrenergic blocking agents that selectively block the actions of catecholamines produced through beta receptor stimulation. At the cellular level, the drugs inhibit the activity of the membrane enzyme adenyl cyclase and thus decrease the production of cyclic AMP. Beta blockers जितने भी हैं, they have almost same effects, but they differ in potency, beta receptor selectivity, agonistic activity, and membrane stabilizing effect, that is local anesthetic. So some are more potent, some are less potent, some have selective action, some have no selective action. Adrenoceptor, as I have told you, it has agonistic activity. ये पुराने जमाने में कोई 30-35 साल पहले ट्रेसिकार के नाम से ट्रेड नेम था उसका, adrenoceptor यूज होता था, वो उसको फिर बैन कर दिया because of its agonistic activity. Beta blockers block vasodilatation. ये उनके उलट इफेक्ट है एड्रेनलिन के बिल्कुल. Beta blockers block the vasodilatation, cardiac acceleration, increase cardiac output, bronchial dilatation and hyperglycemia. ये उनको ब्लॉक करते हैं, ये ऑपोजिट है उनके एक्शन. तो कार्डिक एक्सीलरेशन को भी कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट को भी कम करते हैं, ब्रोंकियल डायलेटेशन को क्या ब्लॉक करते हैं, इसका मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे ब्रोंकियल मसल्स में. एड्रेनलिन आप लोगों को पता है कि वो हाइपरग्लाइसीमिया कराती है बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये हाइपरग्लाइसीमिया को काउंटरएक्ट करती है, हाइपो कराएंगे, हाइपो करा सकते हैं. Propranolol blocks effects of sympathomimetics that are mediated through beta receptors. Rate of impulse generation at AC node is reduced. Velocity of conduction through AV node is reduced. Force of contraction of the heart is decreased. So they have almost antagonistic reverse effects as that of the adrenaline. Oxygen consumption of the heart. Adrenaline जैसे प्रोप्रानोल के अगर बीटा ब्लॉकर्स के हम यूजेस थोड़ा सा अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. उनके मेन यूज है हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया. तो उसमें जो एंजाइना में यूज करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ हार्ट को डिक्रीज करता है. ब्लड प्रेशर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. तो इसमें ब्लड प्रेशर को कभी कम करते हैं, हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, एंजाइना में भी बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं और एरिथमियाज में भी इनका कुछ रोल है. Bronchial dilatation is decreased. This means they will cause bronchoconstriction. Propranolol, as it inhibits the stimulation of beta receptor, which is caused by sympathetic activity, the drug causes bronchoconstriction, and the patient sees difficulty during this. इसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोप्रानोल अगर देंगे किसी पेशेंट को तो it's likely it may further aggravate the bronchoconstriction. So one of the contraindication is that of the bronchial asthma. On metabolism, जैसे मैंने बताया एड्रेनलिन के बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट है, तो ये रिड्यूस दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस. अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो शुगर ज्यादा बढ़ती है, बनती है, जिसमें ब्लड शुगर इंक्रीज होता है जैसे एड्रेनलिन के मैग्नीशियम में. लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट है, तो रिड्यूसेस दी ग्लाइकोजिनोलाइसिस. व्हेन ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज नॉट broken down, no glucose is released
and blood glucose level is decreased. Lipolysis in adipose tissue is also inhibited, thus reducing the concentration of free fatty acids in the blood. These actions decrease the BMR, decrease the oxygen consumption, and to some extent reduce the body temperature. And central nervous system, एड्रेनलिन का आपको पता है, आप लोग याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा उसका CNS स्टिमुलेशन है, तो अदरवाइज CNS स्टिमुलेशन एड्रेनलिन का भी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन प्रोप्रानॉल का क्या होगा, in larger doses propranolol produces depression of the central, बिल्कुल उसका उलट इफेक्ट है। In therapeutic doses no effect on central nervous system, it also relieves anxieties and worries and inhibits the tremors. एक कंडीशन ट्रेमर्स की जो होती है उसमें भी हम कभी कभी इसमें देते हैं, वो आगे चल के हम उस अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसके मेन इंडिकेशंस पे आ जाए बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स के, तो एक हाइपरटेंशन, एरिथमियास, एंजाइना एंड पैलेट स्टेटोलॉजी। व्हाट इज पैलेट स्टेटोलॉजी? इसमें टेट्रा मींस 4, इसमें 4 जो पॉइंट्स हैं आपको नजर आएंगे पैलेट स्टेटोलॉजी में। मेल पोजीशन ऑफ द aorta, interventricular septal defect, pulmonary stenosis and right ventricular hypertrophy। 4 जो चीजें होती, ये हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है इसको हम कहते हैं पैलेट स्टेटोलॉजी, उस कंडीशन में यूज करते हैं। बाकी वो 3 यूज जो मेन मैंने बताया आपको, हाइपरटेंशन, कार्डिक एरिथमियास एंड एंजाइना पेक्टोरस आर some of the important indications of the beta blocking drugs। अगर आप इसमें देखें थायरोटॉक्सिकोसिस में हम प्रोप्रानॉल कभी कभी देते हैं, हाइपरटेंशन में है, ग्लाकोमा में थोड़ा सा इंट्राक्युलर प्रेशर डिक्रीज करता है, खासतौर पर टिमुलाल। ग्लाकोमा में टिमुलाल जो बीटा ब्लॉकर है वो इंट्राक्युलर प्रेशर को कम करता है। और इसमें अगर नीचे आप देखें थायरोटॉक्सिकोसिस में प्रोप्रानॉल खास तौर पर देते हैं टू रिड्यूस द कार्डिक रेट एंड पोटेंशियल फॉर एरिथमिया। Arrhythmias prophylaxis of the myocardial infarction to prevent the tachycardia and angina pectoris। इसमें अगर आप देखें ड्रग, उसकी रिसेप्टर सिलेक्टिविटी बीटा 1 या अब आप प्रोप्रानॉल के साथ देखेंगे तो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों इफेक्ट। थेरेप्यूटिक यूज में आपको नजर आ रहा है हाइपरटेंशन, ग्लाकोमा, मिग्रेन, हाइपरथायराइडिज्म एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इनमें सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट एक्टिव बीटा ब्लॉकर है वो कौन सा है? नडुलाल। नडुलाल is one of the longest acting beta blocking drug। Propranolol inhibits the sympathetic stimulus of heart and also act directly to stabilize the membrane of the cardiac muscle। Propranolol decreases sodium effects during depolarization and increases the potassium efflux during repolarization। As a result of these actions, the conduction velocity and automaticity are increased and refractory period is prolonged। Propranolol is particularly effective in digitalis induced area। डिजिटलस डिटॉक्सिन या इस किस्म की जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से जो एरिथमिया होते हैं उनमें खासतौर पर प्रोप्रानॉल इफेक्ट। अगर कंट्राइंडिकेशन पे आ जाए तो जैसे मैंने बताया कंट्राइंडिकेटेड इन bronchial because it may further aggravate this condition। In heart block has almost same effect along with the hypoglycemic agents diabetes, because it is likely
it may cause some decrease in blood sugar and in congestive cardiac failure. Practolol, Practolol is more specific for beta-1 receptor. Protects the heart against excessive sympathetic nervous system stimulation, reduces myocardial block and oxygen consumption. Has no membrane stabilizing, but is useful part for cardiac healing. Less dangerous than proportion for asthmatic patients. तो अगर asthmatic patient है तो उसमें हम propranolol नहीं बल्कि practolol दे सकते हैं, because it has comparatively selective action. It is not going to cause that bronchoconstriction as compared to that of the propranolol. Is more likely to cause bronchoconstriction as compared to practolol. Local anesthetic effect simply is membrane stabilizing is a disadvantage. When used beta blockers, they are used topically in eye because it decreases protective effects and increase the risk of corneal ulceration. टिमुलाल का मैंने बताया था कि ये हम कहाँ दे सकते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए. बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स में खास तौर पर टिमुलाल का जो रोल है वो टिमुलाल एंड सम अदर बीटा ब्लॉकर्स do not possess local anesthetic effect, so they have a specific role in the management of the intraocular. Most of the systemic agents have been developed for chronic oral use, but bioavailability and duration of action vary widely. जैसे मैंने आप लोगों पहले भी डिस्कस किया है कि भाई इसमें जितने हमने बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स डिस्कस किए हैं, क्लासिफाई किए हैं, इनटू प्रोप्रानोल, प्रैक्टोलॉल, टिमुलाल, मेटुलाल, एस्मोलाल, इसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग एक्शन है वो कौन से बीटा ब्लॉकर का है? एस्मोलाल. इसका कोई 10 मिनट तक इसको effect है. Espanol is the short acting ester beta blocker that is only used for it. Nadolol is the longest acting beta blocker. Acebutolol, atenolol and nadolol, they are less lipid soluble than beta blockers and probably enter the CNS to a lesser extent. The cardiovascular application of beta blockers, especially in hypertension, angina, and arrhythmias, are extremely important. The treatment of heart failure, अब देखें बीटा ब्लॉकर्स जितने हैं आप लोगों को पता है कि ये they are contraindicated in heart failure, लेकिन almost all of them are contraindicated in acute heart failure. अब इसमें ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ acute heart failure में हम बिल्कुल नहीं दे सकते. Treatment of chronic, not acute heart failure, is a newer application of beta blocker. Newer application क्या है? अब इसमें नॉर्मली तो ये है कि हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने चाहिए, दे आर कंट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ कार्डियक फेलियर. लेकिन इसमें एक कंडीशन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स की एक न्यूअर जो एप्लीकेशन है उनमें भी दो, एक कैल्बिटोलॉल है, एक और है जो हम दे सकते हैं क्रॉनिक
कार्डिक फेलियर में that too is very carefully targeted and it should not be given in acute cardiac failure at all. So treatment of chronic heart failure is the newer application of beta blockers. Features of some of the beta blockers in common. ये आपको काफी स्लाइड नजर आ रही होगी, प्रोपेनलाल से लेकर आस्पिनलाल, सोटोलाल, टिमुलाल, मेट्रोलाल, पेट्रोलाल, इंडुलाल, एसिडिटलाल, एटिनोलाल, रिसेप्टोलाल, टेरोसिन, पेटॉक्सोलाल। इनमें आप देख रहे हैं कि इनमें एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी दी गई है। बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी दी गई, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे इसके इफेक्ट हैं और किसका कितना है, बीटा 1 पे ज्यादा है या बीटा 2 पे ज्यादा है। और हाफ लाइफ इसमें दी गई है, जैसे मैंने बताया सबसे कम जो इसको लाल का हाफ लाइफ है, ड्यूरेशन 10 मिनट्स तक है इसका, और सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हाफ लाइफ है इसकी नडुला, 24 आवर्स तक, 16 to 24 आवर्स हाफ लाइफ। Clinical trials have shown that beta blockers can reduce morbidity and mortality when used properly. ये मैंने आपको बताया कि भाई बीटा ब्लॉकर्स जो हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देते हैं उसमें भी ये 2-3 ड्रग हम कैविडोलॉल, मेटोप्रोलॉल, लेविटिडोल स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं, ये हम दे सकते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर में। अगेन दे आर वेरी केयरफुली ट्राइटेटेड and appear to be beneficial in cardiac failure, chronic cardiac failure, and they have been reported to reduce the morbidity and mortality when used properly. That's also essential. तो इसमें क्या हो गया, लेविटोलॉल, कार्बिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल. These are few beta blockers that we could use in case of chronic cardiac failure only. ये हाफ लाइफ है, ये मैंने आप लोग अगली स्लाइड में पिछली में बताया था। एस्मोलाल की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ 10 मिनट्स, एसिबिटोलाल, पेंडुलाल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनलाल, टिमुलाल, लेविटोलॉल 4 to 6 आवर्स। नडुलाल की सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है 12 to 15